everyone, a very good afternoon. My name is Hema Chaudhary and I welcome you all to the Pratham Test Prep YouTube channel. And today we are here with a deep dive session on a new topic titled Climate Change Performance Index 2023. Now, if we talk about this particular topic, why this is so important from the examination point of view, reason being it is correlated with all other important topics like COP27 Conference of Parties. The main aim behind that, the climate change, which itself is a very important topic for all the undergrad entrance exams, especially for CLAT, AILET exam, and not just undergrad entrance exam, for any competitive exam. This topic is considered as one of the most important topics. So when we talk about climate change, it is very important to know the performance of the major countries, to know about the rankings of major country in the climate change performance index released every year. And today we are going to talk about the Climate Change Performance Index 2023 recently released, right? So there are few things that we need to focus on this. But before that, let me just tell you about other important sessions that we do apart from this deep dive session. So deep dive session ki agar hum baat kare, this particular session is being done on 2 days in a week by Pratham Test Prep. One is Tuesday and another is Thursday at 3 p.m. with new topics, right? And when we talk about other important topic, that is Current Affairs Samvad, another very important series by Pratham Test Prep. We do it on 2 days, not 3 days, sorry. We do it on 2 days, Monday and Friday. And we do it at the time when all are free, most of the people are free, 8:30 p.m. Then we do vocabulary session on 3 days a week, which is Tuesday, Thursday and Saturday, and the timings are 8:30. Then we also do legal current affairs sessions, especially for the law students who are preparing for CLAT, AILET, SLAT and other entrance exam of law field. So legal current affairs का हम करते हैं 3 दिन, Monday, Wednesday and Friday at 3 p.m. Very important for law students. Apart from that, sometimes we also do quantitative aptitude tips and trick session, logical reasoning tips and trick session, which is being conducted twice a month. And if you want to know when and at what time, what you need to do is press the bell icon to get notification of all the upcoming videos at the Pratham Test Prep YouTube channel. Right, apart from all these current affairs and deep dive sessions, vocabulary session, very important session जो हमारा 5 days a week होता है, that is newspaper analysis session, which covered all the important news in all the major newspaper which are important from the examination point of view. And we do it on 5 days a week, which is from Monday to Friday at 11:30 a.m. So to help yourself in the preparation of any entrance exam, what you need to do is follow Pratham Test Prep YouTube channel, watch these sessions and get all the information, important information in your hand, right? So let's just quickly start our today's session, and the topic is Climate Change Performance Index. So first thing first, whenever we talk about any topic like Climate Change Performance Index, we need to firstly focus on the key highlights. So when we talk about key highlights of the climate change, I'm sorry. I'm so sorry, guys. Okay, this is because of my bad throat. So, if we talk about Climate Change Performance Index 2023, always remember whenever we talk about ranking or whenever we talk about index, we need to follow on 3 major things. Pehla, which country is the top ranked country? Second, because we are giving Indian examination, we are Indian, so it is very important to know about India's rank. And third, we are talking about an index, so obviously that index or that particular ranking is being released by some organization. So you should know that that particular index or ranking has been released or published by who, right? Or published by which organization.
ये 3 तो ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दिस वी कैन ऑल्सो फोकस ऑन अदर facts, right? We can also focus on other facts. So we need to remember on these things. So top ranked country, India's rank, and published by which organization. So if we talk about climate change performance index 2023, it was released and published by 3 environmental non-governmental organization. And कौन सी 3 organization? German Watch, second New Climate Institute, and third Climate Action Network International. So German Watch, न्यू क्लाइमेट एंड कैन इंटरनेशनल, इन तीनों ने मिलके ये रेडी किया, इसको देन पब्लिश किया गया एंड इट वाज रिलीज्ड. नाउ पहला पॉइंट कवर्ड दैट इट वाज पब्लिश्ड बाय होम. सेकंड, if we talk about rank of India in this, so India rose to 2 spots to rank 8th out of 63 countries. So you need to remember here that what is India's rank? India's rank in the year 2023 is 8. यहाँ लिखा है that we rose 2 spots. That means ये rank है 2023 में. So if we talk about India's rank in 2022, so that was 3rd, right? So 2023 के लिए ये ranking release हुई है at the end of 2022. Last year ये release हुई थी at the end of 2021 for the year 2022. अब आते हैं टॉप रैंक कंट्री पे. So if we talk about overall standing and overall ranking in this particular index, no country has been ranked at first position. First छोड़ो, in fact from past 2 to 3 years no country had been ranked at first 3 positions, which is ranked first, second and third on the index. So अगर question आता है which country has been ranked at first position in the climate change performance index, answer will be no country, right? So ये 3 चीजें आपको याद रखनी है. climate change performance index 2023 and not 2022. Don't get confused with the years. We are talking about 2023. Published by 3 environmental organization: German Watch, New Climate Institute, and CAN International. CAN stands for Climate Action Network. What is the rank of India? Rank of India is 8th in this ranking of 2023. Last year the ranking was 10th, and that is why we are saying that India rose to 2 spots to rank at 8th position out of total how many countries? Out of total 63 countries. Which is the top ranked country? First position. So first, second and third ranking पे, first, second and third position पे we don't have any country. So first position, second position and third position, this is blank in this particular ranking. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. Now why it was in news? Because the ranking was released. And why it is important for India? Because India rises 2 spots to 8th rank in the climate change performance index. And when we talk about climate change performance index, it was released in COP27. It was released in 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसीलिए हम इसको बोलते हैं COP, विच स्टैंड्स फॉर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज. एंड बिकॉज 27 कॉन्फ्रेंस था, सो COP 27 कहाँ हुई थी? ये हेल्ड इन इजिप्ट, राइट? assessing 59 countries and the European Union on climate change policies and action. So 59 plus European Union, so in total अगर हम देखें 63 countries को रैंक किया गया था इसमें, राइट? नाउ हाईलाइट्स की अगर हम बात करें, मेन 3 हाईलाइट्स के बारे में हमने आगे फर्स्ट अपनी जो PPT का स्लाइड था उसमें डिस्कस किया था, बट थोड़ा सा हमें क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में समझना पड़ेगा. So it is published annually. So it is published every year since the year 2005. So it started in which year? You need to remember the year. It started in 2005, right? The name of the index is Climate Change Performance Index. है क्या ये? It is basically an independent monitoring tool for tracking what? For tracking the climate protection performance of 59 countries and European Union. And when we talk about these 59 countries together, right, European Union के अलावा अगर हम बात कर रहे हैं
59 कंट्रीज की. सो इट अकाउंट अराउंड 92% ऑफ global greenhouse gas emission. So when we talk about greenhouse gas emission, this is the major issue in front of the world, right? And जो जिनको रैंक किया जा रहा है, they account for around 92% of global greenhouse gas emission, right? And जैसा कि हमने अभी पहले भी डिस्कस किया, this ranking is published by 3 environmental non-governmental organizations: German Watch, New Climate Institute, and CAN International, which is Climate Action Network International, based in which country? In Germany. This is very important. आपको ये भी याद होना चाहिए, right? Now, if we talk about the aim of Climate Change Performance Index, that क्यों इसको लाया गया, क्यों किया जा रहा है? So, Climate Change Performance Index aims to enhance the transparency, right? किस चीज़ में? In the international climate policies, and also it enables the comparison of climate protection efforts and progress made by individual countries. किसी भी कंट्री को एसेस करना कि वो क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट प्रोटेक्शन के लिए कितना एफर्ट कर रहे हैं, कितना उन्होंने प्रोग्रेस किया है, कौन कौन सी पॉलिसीज उन्होंने अडॉप्ट किया, एंड व्हाट आर द इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिटिक्स एंड हाउ द कंट्रीज आर we can say that cooperating and coordinating with each other for the climate change or climate protection. So अगर हम यहाँ पे बात करें, why are we covering this fact again and again? Because this is important from the examination point of view, that India climbed how many spots? 2 spots. To rank at what position? 8 position. Out of how many countries? Total 63 countries. In which ranking? Climate Change Performance Index 2023. Remember, we are talking about 2023 and not 2022. Now, when we talk about climate protection performance or climate change performance index, it is assessed in 4 categories, which is further divided into 14 total indicators, and 4 categories में divide करके इसको assess किया जाता है, जिसमें पहला है ग्रीन हाउस गैस एमिशन. ओवरऑल स्कोर में 40% स्कोर इसके बेसिस पे दिया जाता है, राइट? सो आपको 4 इंडिकेटर्स या 4 कैटेगरीज भी पता होनी चाहिए और उनका परसेंटेज इन दी स्कोर भी पता होना चाहिए. रिन्यूएबल एनर्जी, राइट, 20%. एनर्जी यूज फर्दर 20%. and climate policy adopted by that country 20%. So 40% of greenhouse gas emission, 20% of renewable energy, 20% of total energy use, and 20% of climate policy adopted by that country. ये किसी भी कंट्री का ओवरऑल 100% स्कोर जो है वो डेवलप करता है, एंड उसके बेसिस पे इस 100 में से जो स्कोर निकल के आता है, स्कोर आउट ऑफ 100, उसके बेसिस पे कंट्रीज को रैंक किया जाता है. एंड इसके बेसिस पे अगर हम फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन की बात करें तो वी नीड टू रिमेंबर दैट when we talk about these positions, they are vacant. No country has been ranked at first, second or third position in this ranking. Now, we just don't need to, remember just the ranking of India in this index, but some further more facts related to India's performance and other countries' performance. So, अगर हम बात करें इंडिया की, we can say that first point, ये बार बार आ रहे हैं, India jumps 2 spots higher, now ranked at 8. And when we talk about the second important thing, India ranked 10th in the year 2022, and that is why we are saying 2 spots higher, right? India's ranking in categories, so we have 4 categories. उन कैटेगरीज में भी अलग अलग रैंकिंग है, तो वो यहाँ पे देखते हैं. ओवरऑल स्कोर के बाद ये जो ओवरऑल रैंकिंग है वो निकल के आती है. सो अलग अलग कैटेगरीज में देखें, ग्रीन हाउस गैस एमिशन में इंडिया रैंक्ड एट 9th. रिन्यूएबल एनर्जी कैटेगरी में इंडिया रैंक्ड एट 24. एनर्जी यूज कैटेगरी में इंडिया रैंक्ड एट 9. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट क्लाइमेट पॉलिसी की बात करें तो इंडिया रैंक्ड एट 8. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट ओवरऑल रैंकिंग,
ओवरऑल रैंकिंग ऑफ इंडिया इज 8th, राइट. तो ये हमें पता होना चाहिए. देन इफ वी टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया रैंक्ड दी, यहाँ पे याद रखना है, इंडिया रैंक्ड अमंग दी टॉप 5 कंट्रीज इन द वर्ल्ड. इंडिया जो है वो वर्ल्ड के टॉप 5 कंट्रीज में इन इट्स परफॉर्मेंस रिलेटेड टू climate performance, or you can say climate change, and it is ranked best among the G20 countries. So when we talk about G20 countries, right, G20 countries की बात करें, इसमें टॉप रैंक या बेस्ट रैंक कंट्री इज इंडिया. इसमें टॉप रैंक या बेस्ट रैंक कंट्री इज इंडिया. नेक्स्ट 4th की बात करें तो इंडियाज रैंक इज बेस्ट अमंग ऑल द लार्ज इकोनॉमीज in the world. So if we talk about the India's rank in the large economies, India's rank is top economies. It is best among the large economies. Now India की बात करें तो India earns a high rating, right, किस चीज़ में? In the global greenhouse gas emission and energy use category. So जो 4 कैटेगरीज हैं, कौन कौन सी? ग्रीन हाउस गैस एमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी यूज एंड क्लाइमेट पॉलिसी. ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड एनर्जी यूज में इंडिया को मिली है हाई रेटिंग, एंड इंडिया गॉट मीडियम रेटिंग फॉर क्लाइमेट पॉलिसी एंड इट्स रिन्यूएबल एनर्जी. सो हाई रेटिंग मिली है किसमें? आपको ये भी याद होना चाहिए. हाई रेटिंग मिली है ग्रीन हाउस गैस एमिशन में एंड एनर्जी यूज में, एंड मीडियम रेटिंग मिली है किसमें? क्लाइमेट पॉलिसी and renewable energy. So we need to remember this particular point. Now if we talk about India, the country is on track to meet its 2030 emission target. ये याद रखना है that India has already announced a 2030 emission target which is compatible with a well below 2 degree Celsius scenario. However, when we talk about the renewable energy pathway is not on track for the 2030 target. So India has already decided and announced its 2030 target related to climate, and when we talk about emissions, so we are on the track of it, but when we talk about renewable energy, we are not on the track. So that means we can say that in the field of renewable energy, we will not be able to, we might not be able to achieve the targets decided for the year 2030, right? Now, if we talk about क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसने इंडिया को प्लेस किया है एज दी ओनली G20 कंट्री इन दी टॉप 10 रैंक. इनफैक्ट अगर हम बताएं G20 कंट्रीज में भी बेस्ट रैंक कंट्री इज इंडिया, जो अभी हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया, एंड इट इज दी ओनली G20 कंट्री विच इज अमंग द लिस्ट ऑफ टॉप 10 कंट्रीज. नाउ अगर हम बात करें, जैसे हमें पता है फर्स्ट ब्लैंक है पोजीशन, कोई नहीं है. सेकंड ब्लैंक है पोजीशन, कोई नहीं है. थर्ड ब्लैंक है पोजीशन, कोई नहीं है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन एंड सेवन्थ पोजीशन, चारों क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इंडिया की पोजीशन इज 8th. तो इंडिया से ऊपर जो कंट्रीज है उनके बारे में पता होना चाहिए. सो फोर्थ रैंक पे वी हैव डेनमार्क. सो अगर हम हाईएस्ट रैंकिंग देखें तो किसकी है? फर्स्ट 3 खाली है, तो हाईएस्ट किसकी हुई? डेनमार्क की. आप टॉप रैंकिंग नहीं बोलोगे इसको, बट हाईएस्ट रैंकिंग बोलोगे, टॉप या फर्स्ट नहीं बोलोगे. एंड फोर्थ पे जो कि हाईएस्ट रैंकिंग है वो किसकी है? डेनमार्क की. फिफ्थ रैंकिंग पे कौन है? स्वीडन. देन वी हैव चिली एट 6, and then we have Morocco at 7, and 8 पे we have India. And we need to remember all for small countries, because they were ranked above India at the 4th position, 5th, 6th and 7th position, right? And जैसा हमने पहले भी बताया that first, second and third ranks, they were not awarded to any country. Now we will talk about the positions of major countries. If we talk about UK ranked at 11th position in Climate Change Performance Index 2023.
if we talk about China, because the countries were criticizing China's role in the greenhouse gas emissions, so China का जो रोल है या चाइना की जो रैंकिंग वो याद करना ज़रूरी है. China falls at the rank of 51st in Climate Change Performance Index 2023 and received an overall very low rating. And if we talk about United States, the major company, the biggest, largest economies in the world, right? It rises 3 ranks to 52nd. This year, the rank of US is 52nd, which is still overall a very low rating, but it has improved from last year. And if we talk about the ranking of Iran, it is Iran in this ranking. This is 63rd. And why the ranking of Iran is important? Because this is the last position in the ranking. So top highest हमने पढ़ा किसकी है, डेनमार्क की, जो कि 4th पोजीशन पे, बिकॉज फर्स्ट सेकंड थर्ड ब्लैंक है. लास्ट पोजीशन पे विच इज़ द 63rd पोजीशन कौन सी कंट्री है, ईरान. और इंडिया की रैंक क्या है, 8th, यूके 11th, यूएस 52nd एंड चाइना 51st. सो जो मेन था इस पूरे स्लाइड में वो मैंने फिर से आपको रिवाइज करवा दिया. एंड रिमेंबर वन मोर थिंग, इंडिया वॉज द ओनली G20 country in the top 10 rank, and India has been ranked at the best among all the G20 countries, right? चलिए, नाउ इसके साथ साथ ये भी नोट डाउन करना है दैट इंडिया जो है it ranked at top in the grouping of top 10 emitters. So if we talk about the top 10 largest greenhouse gas emitters in the world, उसमें भी इंडिया जो है it has been ranked at the top, which is followed by Germany and then Japan at 2nd and 3rd position respectively in this grouping. Then if we talk about worst performers in the overall ranking, अभी हमने डिस्कस किया वर्स्ट परफॉर्मर वाज Iran at 63rd position. Then we have Saudi Arabia and Kazakhstan also. They are particularly remarked as weak in renewables and they are heavily reliant on oil. Now when we talk about Saudi Arabia, this point is important because question can come like this. Which country is name the country with the highest per capita greenhouse gas emission among the G20 nation. So G20 nation की बात करें, Saudi Arabia is the country with the highest per capita greenhouse gas emission among the G20 countries. Now इस पर्टिकुलर न्यूज़ से एक चीज़ तो हमें क्लियर हो गई है दैट यू शुड नो अबाउट G20 वेरी एफिशिएंटली, दैट व्हेन वी टॉक अबाउट G20 इस टॉपिक में G20 ग्रुप ऑफ 20 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो बेसिकली अगर हम इसकी बात करें, इट इज़ एन intergovernmental forum which consists 19 countries, which consist, इसको आप लिख लें, 19 countries and the European Union. इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है to address the issues related to global economy, जिसमें आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी इंक्लूडेड है. एंड अपार्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यहाँ पे जो मेजर इश्यूज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, वो भी इसमें बहुत ज़रूरी है, उसके लिए भी ये काम करती है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ईयर, सो यहाँ पे बेटा हम G20 की बात कर रहे हैं. इट वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 1999. सो G20 के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, जैसे मैंने बताया, राइट. सो आपको G20 के बारे में पता होना चाहिए कि उसका कब फॉर्मेशन हुआ, राइट. इसके अलावा G20 एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, राइट. एंड इसी के साथ आपको एक और चीज़ याद होनी चाहिए. रिसेंटली अगर हम बात करें, सो आपके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो 17th G20 समिट हुआ, राइट, 17th G20 समिट, या जिसको हम G20 कॉन्फ्रेंस कहेंगे, 17th G20 समिट या 17th G20 कॉन्फ्रेंस जो हुआ है, जो कि हुआ है इन बाली, अभी हुआ है रिसेंटली, राइट. सो इसका जो मोटो था G20 समिट, 17 G20 समिट का,
इसका मोटो वॉज रिकवर टुगेदर, एंड मैं आपको रेफरेंस भी बताऊंगी व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स. रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर, राइट. सो दैट वाज द मोटो. एंड इसमें ये डिसाइड किया गया दैट इंडिया हैज नाउ अज्यूम द प्रेसिडेंसी. इंडिया हैज नाउ assume the presidency of G20. Assume the presidency of G20. And क्योंकि now India is the G20 president, so जो 18th G20 summit या कॉन्फ्रेंस होगा वो कहाँ होगा? इंडिया में. कहाँ होगा? इंडिया में. कब होगा? 2023 में. तो आपको ये पॉइंटर्स पता होने चाहिए, नॉट जस्ट दी पॉइंटर्स रिटन इन दी स्लाइड्स. येस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट द एडिशनल थिंग दैट आई एम राइटिंग हियर, राइट, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो आपको थोड़ा वो याद रखना पड़ेगा. ठीक है. आई होप ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर. G20 इंटरगवर्नमेंटल forum which consists of 19 countries and European Union. It addressed the issues related with the global economy, which includes the financial stability of the countries, which includes climate change mitigation and sustainable development of the countries. It was formed in the year 1999 and 17 G20 summit हुआ है बाली में with the motto recover together, recover stronger. And now India has assumed the presidency of G20 and 18 G20 summit या कॉन्फ्रेंस होगा इंडिया में. वो भी कब होगा? 2023 में, right? So it includes the countries like Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Japan, Mexico, Republic of Korea, Republic of South Africa, Saudi Arabia, Russia, Turkey, UK and USA and European Union. आपको पता होने चाहिए. क्वेश्चन आ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ G20. आप वो आंसर तभी कर पाएंगे जब आपको G20 मेंबर्स के बारे में पता हो. ठीक है. सो अभी इंडोनेशिया बाली में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, राइट, इसमें आप कह सकते हो इट इज इन द बैकड्रॉप ऑफ रशिया यूक्रेन क्राइसिस एंड अ मिसाइल अटैक ऑन दी पोलैंड, राइट. तो उसको डिस्कस करने के लिए था. सो दे डिस्कस्ड अबाउट दी हेल्थ इश्यूज, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल लिटरेसी, climate change. So when we talk about G20 leaders, G20 leaders has decided to continue their efforts to keep the rise in the global temperature to 1.5 degrees Celsius, reaffirming the commitment, the temperature goal decided in Paris agreement in the year 2015 on climate change. So Paris agreement 2015, the main aim was to restrict, or to, you can say that to keep the rise in global temperature to 1.5 degree Celsius. ये सब भी आपको याद होना चाहिए. These are indirectly related to this climate change topic. चलिए आगे बढ़ते हैं. Now, if we talk about India's history in the climate change and its future aim, so 2022 में India stood at 10th position. 2021 में भी इंडिया की 10th position थी in climate change performance index. 2020 की बात करें तो इंडिया ranked at 9th and now 2023 वाली रैंकिंग में we are at 8th. That means अगर हम इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करें, if we talk about India's performance, we are improving our performance in the climate change performance, right? And since the signing of Paris Agreement in 2015, India has updated its nationally determined contribution. And however, we can say that जो road map ready किया जा रहा है या जो concrete action plan है for achieving the target, it is still missing in India. We need to work a lot about it. And India इसी के साथ it is also among the 9 countries which are responsible for 90% of the global coal production. राइट अगर हम बात करें इंडिया की, इट इज अमंग द 92% ऑफ द ग्लोबल कंट्रीज फॉर द ग्रीन हाउस गैस एमिशन. ऐसे ही इंडिया इज अमंग द 9 मेन कंट्रीज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल गोल्ड प्रोडक्शन. इट ऑल्सो प्लान्स टू इंक्रीज इट्स ऑयल, गैस एंड ऑयल प्रोडक्शन बाय ओवर 5% बाय द ईयर 2030. एंड अगर हम इस टारगेट की बात करें, इट इज इनकम्पैटिबल
विद दी 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट जिसकी हम बात कर रहे थे पेरिस एग्रीमेंट में जो डिसाइड किया गया. इट इज़ इनकम्पैटिबल विद दैट दिस पर्टिकुलर एम, राइट. नाउ एट दी COP26 जो लास्ट ईयर 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज समिट हुआ था इन ग्लासगो, उसमें इंडिया ने अनाउंस किया था इसका कमिटमेंट टुवर्ड्स अचीविंग नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन बाय द ईयर 2070. सो आपको ये याद रखना है दैट COP26 में जो कि कहाँ हुई थी, ग्लासगो, इंडिया ने क्या डिसाइड किया था, नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन, नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन बाय विच ईयर 2070. सो आपको एम के साथ साथ ईयर भी याद होना चाहिए कि इसी ईयर के लिए ये अचीवमेंट आप बोल सकते हो, ये जो टारगेट है ये डिसाइड किया गया है, ये अनाउंस किया गया है एट दी इंटरनेशनल लेवल. सो इंडिया को काम करना पड़ेगा इसके लिए. एंड अगर हम प्रेजेंट की बात करें आफ्टर दिस CCPI रैंकिंग, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग, हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है फॉर पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, राइट, जिनका नाम है श्री RK सिंह. तो अभी इसकी बात हो रही है तो आपको RK सिंह का नाम भी याद रखना है, जो हमारे क्या है, पावर मिनिस्टर, पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर. उन्होंने हाईलाइट किया है कि इंडिया की जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग है, इट इज़ अ टेस्टिमनी टू द लीडरशिप शोन बाय Prime Minister Narendra Modi ji towards addressing the global climate change despite the pandemic and tough economic times. उसके बावजूद भी क्योंकि क्लाइमेट चेंज की तरफ स्टेप्स लिए गए, क्लाइमेट चेंज के लिए पॉलिसीज बनाई गई, स्कीम्स लॉन्च की गई, फ्लैगशिप प्रोग्राम रेडी किए गए, दैट वाज द रीजन दैट इट हैज़ इम्प्रूव्ड द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया इन द क्लाइमेट चेंज डिस्पाइट ऑल द हर्डल्स like pandemic or tough economic times. Now, when we talk about the top 5 rank globally, it reflects that India is implementing energy transition programs such as renewable capacity installation at much faster rate than anywhere in the world. So, अगर question आता है which country is implementing the energy transition programs at faster rate, so energy transition program at the fastest rate, it is being implemented by which country? Our own country, India. Now, when we talk about RK Singh, the power minister, he also highlighted the various demand side flagship programs launched by the government such as Ujala, PAT scheme, and standards and labeling programs that have contributed significantly to this achievement by Indian government in improving the performance of India in the climate change performance. Right now we are talking about again and again about the 27th conference of party के उसमें ये ranking जो है वो release हुई, तो we should first know about the COP27 और 27th conference of parties, इसके बारे में पता होना चाहिए. So अगर हम यहाँ पे बात करें UNFCCC, सो यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी वो कब हुई, नवंबर 2022 में, जिसमें किसने होस्ट किया, गवर्नमेंट ऑफ अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट. सो कब हुई, क्या हुई, COP27 कब हुई, नवंबर 2022, कहाँ हुई, इजिप्ट में, right? So 27 conference of parties हुई and it has been held with a view to build on the previous successes and paving the way for future ambitions to effectively tackle, very important, to effectively tackle the global challenge of climate change, right? This meeting comprises of 27 session of COP serving as the meeting of the parties of the Kyoto Protocol named as CMP 17th, and it was also the fourth session of the Conference of Parties serving as the meeting of the parties to the Paris Agreement, stands for CMA 4. So इसकी अगर हम बात करें तो it was the first climate summit after or since 2016 when it was held in Africa, and next जो conference होगी it will be hosted by Dubai in 2023.
कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की अगर हम बात करें, सो बेसिकली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है, इट इज अ बॉडी विच इज द डिसीजन मेकिंग एपेक्स बॉडी of UNFCCC, which stands for United Nations Climate Change Framework Convention, right? So United Nations Climate Change Framework Convention की बात करें, इसी के थ्रू ये होती है Conference of Parties, and this year it was the 27th and first climate summit held since 2016. and अगर हम बात करें now UNFCCC की, तो it was formed in the year 1994. It was formed in the year 1994 to stabilize the greenhouse gas emission, and also इसका मेन एम क्या है, to protect the earth from the threats of climate change. So आपने देखा हमने climate change performance index से start किया. We talked about the key highlights. We talked about the India's performance. We talked about the organization which released this ranking, right? We talked about the top performers. We talked about the worst performers. Then we talked about the India's progress. Then we talked about the India's past ranking. We talked about the India's future aim and targets. We talked about G20, and we now talked about COP27. Along with this, we talked about United Nations Climate Change Framework Convention, UNFCCC, right? So it was formed in the year 1994 with the aim to stabilize the greenhouse gas emission and to protect the earth from the threat of climate change. And when we talk about Conference of Parties, it meets every year unless the parties decides otherwise. And you should remember the fact that first Conference of Parties meeting was held in Berlin in Germany in the year 1995. You need to remember all these facts. All these facts were important from this particular topic, and when we talk about this particular topic, all these things were important. And when we last talk about the UNFCCC, जिसमें अभी हमने formation year की बात की, now we will be talking about the Conference of Parties and all, that it was signed an agreement. हुआ क्या 27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में, क्या डिसीजन हुआ, मेन हाईलाइट क्या था. नाउ यहाँ पे हमने लिखे हैं हाईलाइट्स ऑफ COP27. It signed an agreement to provide loss and damage funding to the vulnerable countries. पहला मेन पॉइंट. दूसरा, at 27th Conference of Parties, a new 5-year work program was launched. किसको प्रमोट करने के लिए? To promote climate technology solution in developing countries. Third main thing, and यहाँ पे we are just talking about the facts related to the climate change in the Conference of Parties 27. A mitigation work program was launched. A mitigation work program was launched aimed at urgently scaling up mitigation ambition and implementation. And when we talk about the work program which were decided in the conference, it started immediately following the Conference of Parties 27, and जो अभी नवंबर में हुआ था, नवंबर से ही ये स्टार्ट हो गया है, and it will continue until 2030, and with at least 2 global dialogues held each year. And last but not the least, that government से बोला गया है, रिक्वेस्ट की गई है, that they were requested to revisit and strengthen the 2030 टारगेट जो डिसाइड किए गए हैं पहले से ही इन देयर क्लाइमेट प्लान बाय द एंड ऑफ 2023, बिकॉज 2030 के टारगेट्स हैं. सो दिस इज द क्रूशियल टाइम व्हेन दे नीड टू रिव्यू, दे नीड टू रिविजिट एंड दे नीड टू strengthen their 2030 targets related to climate change, and also to accelerate the efforts to phase down the unabated coal power and phase out inefficient fossil fuel subsidies, right? So all these were important from the examination point of view. इसी के साथ I'm hoping that you liked the session and I was able to make this interesting topic more interesting, and I was able to make you understand the critical facts in an easier way. If yes, what you need to do is like the channel, right? Like the video, share the video, subscribe the channel, and most important,
press the bell icon to get more updates, to get notification of all the upcoming videos, right? So I hope you enjoyed the session, and for more such videos, what you need to do is you need to subscribe the Pratham Test Prep YouTube channel, and if you have missed any sessions, you can watch the videos in the videos section of Pratham Test Prep YouTube channel. Bye everyone, bye bye, take care, stay safe, stay healthy. Thank you for watching.